قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Say, O my servants who have transgressed against their souls, despair not of the mercy of Allah, for Allah forgives all sins, for He is oft forgiving, most merciful. कहो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है. Dear viewers, Assalamu alaikum. This is Muhammad Shafiq from British Institute. Hope you will be safe and sound. In this video, I will explain the meaning of the word oft in English and Urdu and explain the verse of the Holy Quran so that you can better understand the meaning of the word oft. So let's get started. Oft. This is an adverb. Oft is usually used for often, archaic or literary. That means many times at short intervals. Often अक्सर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कदीम या अद्दी जिसका मतलब है मुख्तसर वक्फों पर या कई बार के लिए या बहुत या बड़ा. For example, as I have oft said, you need to think before you speak. जैसा कि मैंने अक्सर कहा है कि आपको बोलने से पहले सोचने की जरूरत है. Synonyms. Again and again, constantly, continually, frequently, hourly, much, often or often, oftentimes or oft times, over and over, repeatedly. Antonyms. Infrequently, a little, rarely, seldom. As Allah Almighty says in verse 49 of Surah Hajj, Nabbi ibadi anni annal ghafurur rahim. O Prophet, tell my servants that I am indeed oft forgiving, most merciful. ए पैगंबर मेरे बंदों से कह दो कि मैं बेशक बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ. Allah Almighty says in another surah, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. He is the oft forgiving, the most loving, the Lord of the glorious throne. वो बहुत बख्शने वाला, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है, अर्श अजीम का रब. Allow me to let you know that Allah's name Al-Ghafur happens 91 times in the Holy Quran, making it quite possibly the most well-known name referenced in there. कुरान पाक में अल्लाह का नाम अल-गफूर 91 मरतबा आया है, जिससे ये मुमकिन तौर पर सबसे ज्यादा मारूफ नाम है जिसका हवाला दिया गया है. Oft is also abbreviation in the UK that stands for Office of Fair Trading. Hope you have learned something from this video. If yes, then like and share this video with your friends. Don't forget to subscribe this channel as it is your own channel. Thanks. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.